Unacademy. Let's crack it. हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम की मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू ओरिएंटेशन जो सेशन होते हैं, इंटरव्यू ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं, जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो आप रियलिटी के अंदर किसी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ पर आप उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स को भी देखते हैं कि कहाँ पर उस कैंडिडेट ने गलती की है, कहाँ पर उस कैंडिडेट का जवाब अच्छा रहा है। तो बोनाफाइड पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप सभी लॉ एस्पिरेंट के बेनिफिट के लिए ये वीडियो अभी आपके सामने स्ट्रीम होने वाला है। लेकिन इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट हो, मैं चाहता हूं कि आप पेपर और पेन लेकर जरूर बैठें और जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको सीखनी चाहिए, आपको रेक्टिफाई करनी चाहिए खुद के केस में, उनको नोट डाउन ज़रूर करें ताकि लिंकिंग लॉस का ये जो पर्पस है वो अपने आप में फुलफिल हो सके। आई होप आप इस वीडियो को जो है बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो लेट स्टार्ट दिस स्पेसिफिक इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। Yes, am I audible to you? Right? Good afternoon, sir. Very good afternoon. Briefly introduce yourself. Sir, I am Joginder Jangra. I am from Bhiwani, Haryana. I have done bachelor's in law from BITS Law College, Bhiwani, in the year 2019. Thereafter, I am preparing for this exam, sir. and you had not switched for the master degree? Why? No, sir. After that, in 2019, pandemic, and after that, I start preparation. No, but pandemic has not stopped from you getting degrees now. They have stopped the classes. Sir, Instead, they have started online classes. Sir, I am not interested in online classes. That's why I not take admission. In pandemic, course is taking video conferencings. Okay. Yes, And sir. you are going to be a judicial officer. Yes, sir. Suppose such kind of circumstances exist in our country and you has been instructed to take the video conferencing, etc. Then what will be your opinion? As you have not go ahead for LLM because for the video online classes, then how will you manage such things at that time when you are a judge? Sir, it is the need of our. I shall use these things. So basically, master degree is not the need of your life. Sir, my only goal is to be a judge. That's why I'm not interested. The basic requirement. Suppose if you are not selected for a judge, then what will you do? What will be your alternate strategy? Sir, I will prepare next time. You will prepare next time. Yes, sir. And next time again, if you failed, Sir, I will again try. again you failed. Sir, at last, I will start practicing as a lawyer. You will start practicing as a lawyer. Yes. Fine. There is a provision in Indian Evidence Act regarding certain facts need not to be proved. Yes, sir. Where it has been mentioned? Section 58. Section 58. And facts admitted need not to be proved. Where it has been mentioned? Sir, ये section 58 है. Then, would you like to change your earlier answer? Yes, sir. Then, what will the answer for the earlier question? Section 56. 56 or 57? 56. What is the relation between 56 and 57? Sir, 56 में जिनका जुडिशियल नोटिस टेक कर सकती है कोर्ट वो दिए गए हैं और 57 में वो लिस्ट प्रोवाइड की गई है सर. List provide कर रखा है. Okay. Section 320 have two subsections, subsection 1 and subsection 2.
What is difference between these two subsections? Sir, section 320 CRPC. सर सबसेक्शन 1 में है वो हम पार्टीज है वो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट है वो कर सकते हैं, और सबसेक्शन 2 में है पार्टीज को कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। I think you are competent to answer in English. Yes. Fine. When we talk about the Indian Penal Code, there is a word voluntary causing grievous hurt. Yes, sir. Where it has been defined, voluntary causing grievous hurt. The section 323. 323. Yeah. Acid attack cases has been covered by which sections? The section 326A. 326A and 326B. Sir, punishment. Punishment. There is no other difference between 326A and 326B. Sorry, sir. Okay. Which one is your best subject? According to you, have a better command? Sir, Indian Evidence Act. Indian Evidence Act. Okay. How many sections are there in Indian Evidence Act? Sir, 167 sections. How many chapters or parts? Sir, 11 chapters. How many parts? Sir, parts, I don't know. You don't know. Okay. Chapter 7 is talking about? Sir, of exclusion of oral evidences by documentary evidence. Then chapter 6? Sir, documentary evidence. Chapter 5? Sir, of proof. Proof of what? Chapter 3? The facts which need not be proved. Fact need not to be proved. Chapter 3. Then chapter 4? Sorry, sir. Okay. Which section is dealing about the admissibility of the evidence by court? Admissibility of evidence. The court has power to admit it. So section 135. 135. Okay. Number of witness does not matter. Yes, sir. Credibility of witnesses matter. Do you believe in this statement? Yes, sir. Okay. In a case before you, a boy aged 6 years. A boy is 6 years is witnessing an offense. Okay, he's eyewitness of a particular offense, right? And no other witness is there. He's the only eyewitness. Yes, sir. And he's recognizing the accused. Yes, sir. Perfectly. Then what will be your concern? How will you deal this matter? The section 134 says that, section 1118 states that everyone is able to testify if he is able to understand the question and give a rational answer. So there is no bar for a child that his testimony cannot be accepted if the child witness passes the test of. So you will rely on the witnesses of that child. Yes, sir. लिंकिंग लॉस एक ऐसी मॉडर्न अप्रोच जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके स्टेट जुडिशरी के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी टीम के साथ एफर्ट करती है। यहाँ हम लोग लिंकिंग की जो लेटेस्ट टेक्निक है, इंटरसेक्शन लिंकिंग, इंटर चैप्टर लिंकिंग, इंटर बेरेक्ट लिंकिंग, साथ ही साथ में किसी भी सेक्शंस का प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए उनके डायग्रामेटिक नोट्स बनाना और नोट्स के जरिए लिंकिंग चार्ट्स के साथ में मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप राजस्थान जुडिशरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मॉडर्न टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कोर्स को ऑनलाइन सब्सक्राइब करते समय। पहला ऑप्शन आइकॉनिक, जहां पर आपको 4 एडिशनल फीचर मिलती है। पहली फीचर जहां पर आपको 1-to-1 मेंटोर होगा जो आपको गाइडेंस देगा।
स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली। साथ ही साथ में आपकी जो मेंस टेस्ट सीरीज होगी मेंस एग्जाम की, वहां पर आपकी कॉपी 1 to 1 चेक करके इवेल्युएट की जाएगी। जितने भी मॉक इंटरव्यूज किसी भी स्टेट जुडिशरी के होते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के या अटेम्प्टेड कैंडिडेट्स के, वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे एक्सक्लूसिवली, और डाउट सेशन के अंदर प्रायोरिटी। ये 4 स्पेसिफिक फीचर आइकॉनिक में है, और इसी के अंदर शामिल होता है प्लस कोर्स, और प्लस कोर्स आपको अलग से भी अवेलेबल होगा। प्लस कोर्स के अंदर जो है आप कंप्लीट क्लासेस देख पाएंगे, और कोर्स वाइज नहीं, ये यहां पर आपको ये चीज मिलेगी वैलिडिटी वाइज। एग्जाम्पल, आपने 1 साल का अगर कोर्स सब्सक्राइब किया है तो 1 साल की वैलिडिटी के अंदर जो भी सेगमेंट डील किए जाएंगे, जो भी बैचेस लॉन्च होंगे, उन सभी का आपको एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप जुडिशियल कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो उस समय आप लिंकिंग कोड LINKING लिंकिंग कोड के साथ ही जुड़े, ताकि हमारी टीम आपको अनस्टॉपेबल सपोर्ट जो है देती रहे। अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके गोल ऑप्शन में जाए, जुडिशरी को सेलेक्ट करें, और वहां पर प्लस और आइकॉनिक में से जो भी वैलिडिटी पीरियड आपको चूज करना है उसको चूज कीजिए, एंड देन आफ्टर नीचे एक गिफ्ट टाइप का आइकन ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप लिंकिंग कोड अप्लाई करते जो भी एप्रोप्रिएट डिस्काउंट होगा वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स क्रैक द जुडिशियल एग्जामिनेशन विथ लिंकिंग लॉस। Okay. Co-accused is a competent witness. In Yes. one case, the case has been proceeded on the uncorroborated testimony of that co-accused. Yes, sir. Now the conviction can be illegal. No, sir. Reason behind where it has been provided. Sir, Section 133 states that Which section of Indian evidence sects are talking about co-accused relevancy? relevancy Section 30, sir. Section 30 and then section 10. So Section 10 also. Section 10. Section 10 also. Yes or no? Yes. Yes. Section 10 is talking about criminal conspiracy. Yes, sir. There are 2 co-offender. So co-offender and co-accused are one of the same thing. Yes. One of the same thing. Yes. There is the option of victim compensation scheme when it was inserted in the CRPC. So 2009. 2009 or 2008? So 2009. 2009. And which was the amendment? 2009 or Amendment Act 2008? Yes, sir. Sir, Amendment Act 2008, which was started from 2009. Okay, stay connected. I will get back to you for your feedback. Okay, Mr. Joginder ji. Yes. आपको क्या लगता है कैसा रहा आपका इंटरव्यू? Sir, ठीक रहा है. All good. You belong to Hindi medium No, or sir. English medium? English medium. Your Haryana judiciary interview will take place in English only. Okay. At certain point of time, I have observed that you are answering in your natural mode, that is Hindi or mix-up one. Avoid it. Try to avoid it. Okay. Because in Haryana judiciary, it's totally English medium only. Right. First thing is that. Second thing is that when I ask you, that suppose you are failed, again failed, I'm just checking your mental stamina. Right. First thing is that you passed on that, you are not irritated, then it's okay. Second thing is that is negative point, you are not aware about the exact answer. In such a situation, suppose you have a going, that answer must be, sir, my due passion and my dedication is towards the judiciary only. And what I personally think
if I make a sincere efforts and regular effort in this regard, then one or another day I will certainly succeed in this examination. Okay. And that's the main goal of mine. That's my life is totally sacrificed or dedicated for this thing. तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. अंदर होने से क्या करोगे? सामने वाले को बताओगे तो सही कि आपके अंदर वो डेडिकेशन है, वो कॉन्फिडेंस है, और एक्चुअल में है वो, बट वो दिखा नहीं. Sometimes we need to be a good presentation about the confidence level within ourselves. First thing is that. Second thing is that if you are not aware about the sections, then take a short pause and recall it. Even if you are unable to recall it, then you simply say that I'm not able to recall it right now. But don't give a wrong answer like that. Like 56, 57, 58. 58, admitted document, admitted facts need not to be proved. 56, judicial notice of fact need not to be proved. 57 has been given the list. You have correctly mentioned that 57 is given the list. That's a good one. But earlier one, you are taking unnecessary time. That's not expected. And you said that evidence law is your favorite act. Yes. You have a good command. That's why my most of question was confined to the evidence law only. But even in your favorite subject, you are lacking, then what will be the effect of other subject? It will be a negative impression. Okay? तो आपका जब भी डेट ऑफ इंटरव्यू उससे पहले प्रॉपर तरीके से आप मेडिटेट कर लो क्वेश्चंस को, और ट्राई टू मेडिटेट इन द लिंकिंग मैनर. कनेक्ट करो चीजों को आपस में, ताकि वो एक से साथ साथ 3, 4, 5 सेक्शंस आपके माइंड में रिकॉल हो सके. नंबर ऑफ चैप्टर्स पे आप टोटली बोल्ड हो गए. ओके, चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, एक आपने गलत बताया. चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, चैप्टर 4 ओरल एविडेंस, चैप्टर 3 आपके फैक्ट नीड नॉट टू प्रूव, चैप्टर 4 रिलेवेंसी, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी. तो चैप्टर्स है. अब 11 चैप्टर्स में वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी कंफ्यूज्ड. ओके, so burden of proof is under section 1, under chapter 7. 326A and 326B are totally independent offense. Under 326A, there is a causing hurt by acid attack. Under 326B, hurt is not causing. So these are two totally independent. It's not like that ki 326A define acid attack and 326B punished acid attack. No, it's your misconception or you are not aware about it. Okay, gone through about this. What are the definition provision? Definition provision कौन से, ये आपको ध्यान में रखना है. पनिशेबिलिटी वाले प्रोविजन को स्पेसिफिकली अप्लाई करके देखना होता है. ओके, जहां पर आपसे सवाल कॉम्पिटेंट विटनेस का है, यू आंसर ब्यूटीफुली दैट टाइम. जब मैंने आपसे एक चाइल्ड विटनेस का कहा था, देन यू मेंशन दैट क्वेश्चन एंड आंसर टेस्ट मस्ट बी देयर. इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव अ रेशनल आंसर, देन कोर्ट कैन रिलाई ऑन हिज ओपिनियन. ओके, दैट वाज देयर. यू आर अ गुड वन. Co-accused and co-offender. Co-offender when he committing the offense. Okay, and co-accused when he has been charged. Okay, when he has been charged or named in the FIR, then he becomes the co-accused. Okay, and the biggest weakness what I feel from you is that it's various point of time you answer shortly and take a long pause. For an example, there was a question regarding a particular factor like judiciary noticeable fact or something else, and you answer it very shortly. And yes or no said, and then you start taking pause. No, चला के कई बार कुछ चीजों का आंसर दीजिए ताकि वो अपने आप में आइडेंटिफेबल हो सके. जैसे आपने जब आपने सेक्शन 10 का मैंने आपको बताया, तो सेक्शन 10 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यू आर अवेयर अबाउट दैट, तो आपको वहां पर मेंशन करना चाहिए. सिंपली यस नो करके क्विट नहीं करना है, खासकर वहां पे जहां पर आप आंसर एक्स्ट्रा दे सकते हो. रिमेंबर वन थिंग, इंटरव्यू के अंदर दो ही चीजें चलती है, या तो आप बोलोगे या वो पूछेंगे. ठीक, जहां पे आप ज्यादा चुप रहते हो वहां पे वो ज्यादा पूछेंगे, जहां पर आप बोलोगे तो वो कम पूछेंगे. फंडा समझ में आ रहा है आपको? इट इज द मेन क्रक्स ऑफ एनी इंटरव्यू. ऐसे केस के अंदर थोड़ा आपको जहां पे पता है, डू आंसर, राइट. तो इन चीजों पे यू नीड टू वर्क ऑन दैट. आप इस पे रेंज हो गया, आपका जो है एक प्रॉपर आंसर हो गया, इस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. Anything else you want to know or ask? Okay, then.